जय श्री राम दोस्तों। और आप देख रहे हो टेक्नो इंडिया। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे फॉर्ट्रन प्रोग्रामिंग के जरिए टेम्परेचर स्केल का सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस ट्रांसफर करोगे प्रोग्रामिंग के जरिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लिखते हैं राइट Celsius Celsius to Fahrenheit. Now write put the value of C. This means Celsius. Okay. Now enter. Here is the rate. Here this is the Celsius to Fahrenheit. यहाँ पर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करेंगे तो सेल्सियस का वैल्यू चाहिए, तो सेल्सियस है वेरिएबल, सो रीड सी इज द वेरिएबल. नाउ एंटर देन द फार्मूला. सो इफ इक्वल्स टू, यहाँ पर देख लीजिए यह सेंटीग्रेड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला है सी बाई एफ इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9. ओके, सो इसको एनालाइज करने के बाद सी का वैल्यू होता है एफ इंटू 5 माइनस 32 इंटू 5/9. सो यहाँ पर लिखता है सॉरी यह सी का वैल्यू. सो यहाँ पर एफ का वैल्यू देख लीजिए 9 इंटू सी बाई 5 प्लस 32. ओके, तो लिखते हैं एफ इक्वल्स टू 9 इंटू सी बाई divided 5 plus 32. Okay, so here add a bracket ऐड कर देता हूँ. ब्रैकेट आप दोगे तो अच्छा होगा. कंप्लीट, ठीक है. नाउ एंटर राइट the value of f means Fahrenheit each comma f enter and complete your programming. आपका जो प्रोग्राम को कंप्लीट कीजिए. स्टॉप एंड एंड. सो आपका प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कर लिया. पुट द वैल्यू ऑफ सेल्सियस को जो वैल्यू सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पर देना पड़ेगा. तो सेल्सियस का वैल्यू जितना होगा फ़ारेनहाइट का वैल्यू होगा
इससे भी डिपेंड करेगा। सो रन द प्रोग्रामिंग, देख लीजिए आ गया सेल्स टू फ़ारेनहाइट पुट द वैल्यू ऑफ सी। तो सी का जो वैल्यू है मैं 30 देता हूँ, 30 तो 86। आप पहले प्रोग्रामिंग पर रन करने के पहले आप आपका जो कहीं भी कर सकते हो। आप करने के बाद आप इसको रन कीजिए तो आपका आसान होगा इसके आंसर को प्रूव करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्राई कीजिए आप घर पर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, C = 5F - 32/9। ठीक है, so thanks for watching this video. Like our channel and please subscribe my channel.